माइक ऑन द बाइक एपिसोड 2। एक तो जिधर भी मैं जाऊं हर कोई मुझे देख के कह के भाईजान आपके पिछले टायर में हवा कम है। आई डोंट वांट टू बिलीव दैट। चल रही है तो फिर चलाते रहना चाहिए। एंड obviously they don't want to be proven wrong as well. So yeah, they keep on telling me every time I take a round and go back. Speaking of that, people are not really fond of being proven wrong now, are they? अक्सर का फिगर ऑफ स्पीच होती है एक, जब आप बोलते हैं एक चीज़ के बारे में जस्टिफाई करने के लिए, वो चीज़ बेशक बुरी हो दूसरे बंदे के लिए, उसकी implications बुरी हो, you always end up saying, I hope I'm wrong. But you don't really hope you're wrong, do you? Nobody really wants to be proven wrong. Nobody really wants to be wrong at any point of their life. हर कोई सही साबित होने के चक्कर में लगा हुआ है. And that's what I want to talk about today. What is this obsession with being right at all times? Why aren't we obsessed with being good, being nice, even if we have to be proven wrong, even if we have to accept our faults, accept our mistakes? सही क्यों होना है हमेशा? Why do we as people always have to be the right person? मैंने सही बोला है, मेरी बात सही है, मैं गलत नहीं कह सकता. This obsession is pretty harmful. ये जो एक ह्यूमन साइकी का हिस्सा बन चुकी है, especially in our society, and I am going to keep on blaming our society, keep talking about the society, because there are a few very prominent, not just, I wouldn't call them social evils, but prominent issues in our society, in the people, and most of our material issues are linked with our psychological issues, and I'm obsessed with that. I could be wrong, yes. I wouldn't say I hope I'm wrong, because no, I don't hope I am wrong, but yes, I could be wrong in a lot of cases. I could be right in a lot of cases, but if I am proven wrong in a lot of cases, and I am given examples in a lot of cases, that indeed is an opportunity for me to learn something new. कोई गलत साबित होना, किसी ने मुझे किसी और रुख की तरफ रुजू किया और मुझे दिखाया कि ये भी एक एंगल होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंटायरली गलत हूँ. इसका ये मतलब नहीं है कि उस बंदे ने मुझे ऑफेंड करने के लिए सिर्फ ये किया. I don't think everybody's out there to offend each other. Everybody's just out there to justify their own existence, justify their own mentality. Thank you for dragging that chair. That was a cringy sound. But coming back to the point, I think all of us are just so insecure. And this insecurity हमें लेके डूब रही. यही insecurity है जिसकी वजह से we end up arguing, fighting and going into a verbal spat with people. यही insecurity है जो आपको टेलीविजन पे नज़र आती होगी, between anchors and experts and so-called analysts. ये insecurity है जिसकी वजह से आज मुल्क आपका you know what I mean. I won't talk about that. ये अपलोड भी करना है और ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन आजकल talking about such things on the internet is a bit of a risk. But yeah, once again, I hope I'm wrong about a lot of things. But even if I am, should not be a problem. So अगर आपको कोई बंदा आके कहे कि भाईजान आज तक जो भी आपने ज़िंदगी गुजारी है आपने गलत तरीके से किया, तो आप रिएक्ट करने से पहले समझने की कोशिश कीजिए कि सर जी आपका कौन सा तरीका है, मुझे बताइए. And if that person's advice is suitable or suggestion is suitable, adopt it. If it's not, do not react. You don't have to react. But
अगर किसी की ऑब्सेशन है भी कि आपको गलत साबित करने के पीछे ही पड़ा हुआ हो, क्योंकि कोई अना का मसला बना हुआ है एंड सम सॉर्ट ऑफ competition is going on, and there are a lot of people who are so competitive that they're just out and about to prove the other person wrong. So फिर भी you don't have to react. Stop reacting to the first impact and the story will not continue, and that person won't have anything to play with afterwards. But if you react, if you give the person what he's asking for, then yeah, उसको भी तसल्ली मिल जाएगी और आप भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे और नेगेटिव सोच रहे होंगे. The point being, we need to have a lot of patience within ourselves. It's okay to be proven wrong. It's okay to be, committing mistakes, having some faults. Yeah. ये ब्लॉग बनाते हुए ये बात तो मैंने सोची नहीं थी कि भाईजान बैटरी स्टोरेज ये भी कोई चीज़ें होती हैं, एंड मैं कोई बातें तो ज़्यादा ही करता हूँ अपनी स्टोरेज की औकात के हिसाब से नहीं करता. अच्छा, तो लास्ट बात आफ्टर हाईलाइटिंग दीज टू थिंग्स कि एक तो गलत साबित होने में और गलती करने में और गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है. मेक्स यू अ बिगर पर्सन. इसको नोट कर लें प्लीज़. इट मेक्स यू अ बिगर पर्सन. इन द लॉन्ग रन इट डज मेक यू अ बिगर पर्सन, एंड यस पीपल डू रिस्पेक्ट सच पीपल मोर, वेदर यू बिलीव मी और नॉट. जो लोग अपनी गलतियाँ एक्नॉलेज करते हैं और इंस्टेंटली एक्नॉलेज करते हैं, लोग ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ओवरऑल. एंड द पीपल हु आर सो फॉन्ड ऑफ कमिंग ऑन सोशल मीडिया जस्ट टू एम्बैरस द अदर पर्सन एंड नुक्स निकालने के लिए आते हैं. सिर्फ भी आपने जो लगाया है, जो पोस्ट किया है, उसमें ये गलतियाँ हैं. ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को बताओ क्या कहते हैं? लोगों को नहीं, मतलब इस हरकत को कहते हैं लुच्चियाँ निकालना. कुछ ऐसे लुच्चियाँ निकालने वाले लोग होते हैं जो बिला वजह, विदाउट एनी एजेंडा, habitually just end up hurting your sentiments, and they don't even realize the implications there. जिस तरह काफ़ी लोग ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं, जैसे उन्होंने ठेका उठाया वैसा, एंड फिर then they stoop down to the level of harassment just to justify I don't know, some morality in our society or some invisible values that we're talking about. और अगर आपने एक रिलीजियस कार्ड भी यूज़ किया जाता है, रिलीजियस कार्ड भी अगर आपने करना तो उसके साथ एक गाली लग रही है कि हमारे मज़हब में ऐसा नहीं होता एंड फलाना फलाना फलाना. भाई एक साइड पे मज़हब की बात हो रही है, दूसरी साइड पे आप गाली साथ लगा रहे हो. वाह भाई. सो या, डबल स्टैंडर्ड्स एंड देयर इज लॉट ऑफ हिपोक्रेसी, एंड I wouldn't say I hope I'm wrong. This for sure is something that I have experienced. If you haven't, then you're lucky. Good for you. But I have experienced this. I have seen this happen. And there are a lot of times I had to encounter this. So, इस चीज़ को बिल्कुल consciously, voluntarily हमें खुद निकालना पड़ेगा. But इन चीज़ों को निकालने के लिए we do have to start from ourselves. It's already cliche बात, and once we have started from ourselves, we end up setting examples, and that's what we need to do right now, set examples. We don't have a lot of role models in our society, and the ones we do, or the ones we did, we don't remember them. So let's bring back the old role models, and let's start looking up to them and make our upcoming generation look up to them. And कुछ नए बनाने की ज़रूरत है. तो अगर बनाना ही है तो अपने आप को बनाइए. सेल्फलेस नहीं हो सकते तो selfishly make sure that you are the role model that people look up to. Don't follow trends, please. Trends are ridiculous. So अना का मसला बनाए बगैर, without making it a personal issue or a personal agenda, to go out and telling everyone that they're wrong and you're right. Maybe start looking within yourself and start with acknowledging all the wrong things that you do. Since I'm talking about it and बहुत बड़ा इसे भाषण दे रहा हूँ, I'll start with myself and I'll end this vlog with that, on that note as well. There are a few things
that I need to fix, जो मेरे में गलत है. I need to socialize more. I need to open up more. I need to be more easy to talk to. And I have this wrong habit of judging people before knowing them. ये मेरी गलतियाँ हैं. And yes, जो मैं सारी बातें करता हूँ किसी और से, वो शायद मैं खुद नहीं अप्लाई करता. उन चीज़ों का अगर मैं खुद अप्लाई करता हूँ शायद ज़िंदगी आसान है. So yeah, these are a few things. ये मेरी गलतियाँ हैं कि I need to fix these things. So ये गलतियाँ जब फिक्स हो जाएंगी तो यस, शायद कुछ और गलतियाँ करना शुरू कर दो. एक गलती को दूसरी गलती रिप्लेस करती है. लेकिन उम्मीद है ये होनी चाहिए, और बल्कि फोकस ही होना चाहिए इंसान का कि गलतियों को या फिर बुरी आदतों को अच्छी आदतें ही रिप्लेस करें, ना कि एक बुरी आदत छोड़ी तो दूसरी आ गई. ज़रूरी नहीं है जी बुरी आदतें रखना. एक दफ़ा किसी ने मुझे कहा था कि इंसान को इंसान फील करने के लिए कुछ बुरी आदतों के साथ गुजारा करना पड़ता है. आई डोंट थिंक दैट्स राइट. ज़रूरी नहीं है. जितनी बुरी आदतें आपने एक्नॉलेज की, रियलाइज़ की, ट्राई एक्सट्रैक्टिंग देम आउट ऑफ योर लाइफ. So on that note, not to ponder today. The log is a bit longer than before, and that's another mistake I will acknowledge. But I think 3 या 4 subjects होने चाहिए. इस पे tell me where I was wrong. I want to know, and I will not go aggressive on explaining myself or proving you wrong. But that would be a good reflection. Tell me मेरी कौन सी ऐसी बातें थी जहाँ मैं गलत हूँ, and we can have a very productive discussion about it. Till then, Mike on the bike, out.